आपको पता है दिल्ली में हमारे सारे संसार के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के चैंपियन रहते हैं, क्योंकि दिल्ली इज ऑलवेज द चैंपियन ऑफ द बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है कि जो लोग भी नए नए ज्वाइन किए हुए, जल्दी जल्दी उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भेज दिया जाता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको अभी भगवत गीता का पता नहीं है। तो इसलिए एक यंग लड़का, क्या नाम है उसका जो बात कर रहा पीछे, ऐसे बालों वाला, क्या नाम है? कमल। तो लाइक कमल, bright young boy, very handsome. He was distributing books in the market, and somebody stopped him and said, "Why? Your Bhagavad Gita, why does it say as it is on it?" The boy couldn't understand what to say. What is the answer? He said, "Prabhuji, it is as it is, because as it comes from the factory, we distribute them." That means we don't open them up and read them. We just distribute them. So everybody promised that sometime or the other you have read the Bhagavad Gita. So if we go back to your Bhagavad Gita, you can go back to it at your home, and I have one here. They are all the same, no difference. It clearly says, "Hey Krishna Karuna Sindho," not "Dhu." In English, there is an O, not a U. And in Hindi, there is a O ki matra. O se okhli, U se ullu nahi. Hey Krishna Karuna Sindho. Any other language, whatever you read, Mataji reads, seems to read Urdu. Whatever you read, this Sanskrit will not change. Like the Hare Krishna Mahamantra doesn't change in any language. These are all mantras. The nature of the mantra is that it is unchangeable. In any language, the meaning can change, but the mantra itself does not change. So, please, next time you go home, you open up your Bhagavad Gita and read this. It says, "Hey Krishna Karuna Sindho," not Dhu. "Deena Bandho," not Dhu. So you remember that is how it is pronounced. No big deal. ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं जानते कि हम उन्हें पुकारें, लेकिन फिर भी जब भगवान को पुकारा जाता है तो बंधो। दिस इज अ पुकार. वी आर कॉलिंग आउट कृष्ण's नेम. So we call out Krishna's name is not made by me, written by me, or interpreted by me. This is standard. The "Hey Krishna Karuna Sindho Deenabandhu Jagatpate" is coming. So when it comes to mantras, we should try our best to remain as close to the pronunciation as possible. If you have a limitation, you are some kind of a foreign tongue and you cannot pronounce, you do the best you can, no issue. It's not that Krishna is going to mind that, but it is for our own purification that we should be pronouncing the mantra as clearly as it is as possible. Not that as it is, the Bhagavad Gita stays at my home. I sell the Bhagavad Gitas all the time from my home, and many Bhagavad Gitas go every week.
So today I noticed somebody else placed an ad on the marketplace to sell 3 copies of the Bhagavad Gita. So I noticed the name, I'm not going to mention. I noticed the name that we gave the 3 Bhagavad Gitas in a family to somebody, and those 3 Bhagavad Gitas are up for sale on the marketplace. At least they are honest. They don't want the Bhagavad Gita. They want to get rid of it. They don't want to throw it out or keep it unnecessarily. They want to cash it in. Whatever. It's their prerogative. I'm not saying anything about that. But if I am keeping the Bhagavad Gita and I am claiming to read it, then at least I should start with the invocation we all do. आपने हमेशा देखा होगा कोई भी प्रवचन करने के लिए बैठते हैं, प्रभु जी प्रवचन करते हैं, आप करते हो कभी बिना इन्वोकेशन के? कभी नहीं करते ना? कभी किया है? You ever plan to do it? No, doesn't plan to do it. तो हमें हर बार भगवद गीता उठा के थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहिए. हम लोगों को जो इंडियन बैकग्राउंड से हैं, हमें कोई एक्सक्यूज नहीं. लोग जो हरे नहीं कह सकते वो हारे कहते हैं. हारे क्या होता है हम तो जानते हैं. हम कैसे कहें हारे कृष्णा? कृष्ण कैसे हार सकते हैं? हम तो कह रहे हैं जय श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण की जय. हारे कैसे कहें? लेकिन जिसको पता नहीं वो बेचारा हारे क्या है. तो मुझे नहीं लगता भगवान उसको माइंड करेंगे. लेकिन मैं भी अगर हरे कृष्णा कहूंगा जानते बूझते, तो आई एम नॉट सो श्योर हाउ मच कृष्ण विल अप्रिशिएट दैट. This is like different shlokas for different folks. The same philosophy cannot apply to everybody because we know the meaning. हरे कृष्ण क्या होता है? लोग तो कितना भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं, लेकिन हम भी क्या उनके साथ में कितना और कृष्णा कहना शुरू कर दें? I don't think that makes sense. I don't think our conscience would allow that कि हम भी कितना कहें. कोई कितना गा रहा है, हम भी पीछे से कितना गा रहे हैं. लेकिन अगेन वन मोर टाइम, जो बेचारा कितना ही क्लोजेस्ट बोल सकता है कृष्ण के लिए, उसको उतना ओके है. मैं उसको नहीं कह रहा कि दैट इज रॉन्ग. श्रील प्रभुपाद एक्सेप्टेड दैट for those who cannot speak, because Srila Prabhupada said that you should be singing from the heart. Just like when we are chanting the Hare Krishna Maha Mantra on our japa beads, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In a way, there is 3 kinds of chanting, and these 3 kinds of chanting stands for 3 H's. 3 H's. 1 H, when you start to chant, the mind is not really into chanting yet. How many are at that stage? We are chanting, but the mind is not really into chanting yet. Okay, I am raising my hand not to show you, but I am with you. I am included. That the mind is not really there all the time. So that is called the age of chanting, meaning chanting by hand. That's why Srila Prabhupada introduced the beads, and everybody chant with the beads, so that your hand is engaged in the chanting, and everybody is supposed to chant with the
loud enough sound that you can hear yourself. Your voice from here can reach here. If you did that, it's loud enough. Chanting, japa. Doesn't have to be any louder. Your neighbors don't have to know that you are chanting on your beads. As long as you know, if your own sound is not reaching your ear, then that is not the prescribed chanting that Śrīla Prabhupada gave us. So that is chanting by hand, that at least we are engaging all the senses. Our sense of touch is engaged, our sense of speaking, our tongue is engaged, our ears are engaged, and we should be looking at something Krishna conscious. Like this picture here is making the Janmashtami mood. Where did you get this picture? Why gave you that? This is looking at that picture or any Krishna conscious pictures that we have. Śrīla Prabhupada never ever printed a book without pictures. Smallest little book, a 10-page book, he would put 4 pages of pictures in. Why? Because just speaking, hearing, talking is not enough these days. Because we are all becoming multitaskers. How many of you can multitask? Almost everybody can multitask. No matter you raise your hand or you don't raise your hand. I know you're multitasking. In this day and age, you cannot be. You cannot be without multitasking. You're all of you are multitasking. There is another kind of multitasking. Hearing and chanting. Many people come to me after the class, Prabhuji, it was very nice, it's always very nice, and I have a question, I have an issue, I have a problem. That I like it so much when I hear you or any other speaker speaking about Krishna consciousness, but I take nothing home. कुछ भी याद नहीं रहता. I forget everything. And next day, I am a clean slate again. तो मैंने कहा ये तो अच्छा है हम जैसे क्लास देने वाले लोगों के लिए. अगले दिन भी हम क्लास देंगे तो आपको तो लगेगा तो नहीं है. पुराना तो कुछ है नहीं क्योंकि कल का तो सब गया. But it is said that it is kind of a multitasking. What is the multitasking here? I am hearing at the same time, ignoring at the same time, thinking about something else at the same time, and forgetting at the same time. That's multitasking. Isn't it multitasking? If you're doing so many things at the same time, that is multitasking. So, we should not be multitasking. When it comes to Krishna consciousness, ISKCON से अंदर और ISKCON से बाहर नहीं जाने देंगे. ISKCON से अंदर गया तो अंदर ही रह जाए, नहीं तो ISKCON से अंदर और ISKCON से बाहर, वो no good. So one type of chanting is the chanting in the head, that we engage all of our senses into the act of chanting, including our eyes looking at some nice picture of Krishna. These Krishna pictures are also prarabdha. Everybody understands prarabdha? Sorry, not the prarabdha, prayojana. They also represent prayojana. Everybody understands prayojana? No? Okay, I will explain. So, in Krishna consciousness, it is said that we don't need so much knowledge
We are not trying to get to Krishna by Gyan Marg. But we still need some knowledge. We still cannot be zero and go back to Krishna, go back home, back to Godhead that easily. At least we should know what is going on. Srila Prabhupada said, if you do not know what day it is, what date it is, what time it is not that you are so renounced, it is that you are insane. If you don't know, no matter how much you are into Krishna consciousness or whatever, you should still know where you are, what time it is, what day it is, what date it is. So we have to be always somewhat aware. So it is said that the devotees need three kinds of jnana. Three kinds of jnana. Three kinds of knowledge. So first kind of jnana out of the three jnanas is sambandha jnana. Knowing my relationship with Krishna. I know my relationships. This one is my father, this is my son, this is my brother, he is my neighbor, he is my friend. But these are not the relationships that we need to know. These relationships are not my relationship. Whose relationships are these? These are the bodies. If this person is my father, he is the father of my body. If this person is my son, he is the son of my body, not mine. So, me, if I am not related to any of these people that I am surrounded by, then who am I related to? Am I some kind of an orphan, fell from the sky or something? No. I am related directly, Atma and Paramatma relationship. So to understand that relationship, that I am not this body, I am a soul residing inside the body, and the relationship between Atma and Paramatma, Jivara Swarup Hoye, Krishna Nityadas, and I am stuck here, this is the wrong place, I am not in the right place, this is not my home. Srila Prabhupada said that this material world is compared to, please forgive me for saying this, but I am quoting Srila Prabhupada, that this material world is compared to a toilet. Who goes to toilet here? Everybody. But why do you go to the toilet? You go to the toilet to do your business and you get out right away. You don't say, okay, might as well bring my snacks here. Except the smartphone, of course, nobody can go to the toilet without the smartphone. These days it doesn't work. But other things, we keep them out. Toilet means you do your business and get out. Don't plan to live there, stay there, enjoy there, have your music on and going on. You do that outside. So this material world was compared to the toilet by Srila Prabhupada, and he said that we are here to perform a particular business, and we should perform that business and get out. Don't get attached to living inside the toilet. Is not the place to live. This is not our home. This material world is like a toilet. It is not our home. This material body is full of what we do in the toilet. Every day it gets full again. So that's the right comparison. This material world is not a place for us to live.
then where is my place? If I don't belong here, then where do I belong? I belong where Krishna is. I belong to Krishna Loka, where there are no toilets and no kitchen. Anybody ever heard of a toilet in a Vaikuntha Dham? No? What about a kitchen? There is no kitchen, there is no toilet. There is no beds. Okay, at night we take rest here. You don't have to take rest. That is Vaikuntha. Everybody wants to serve so much. Like you have, let's say, Gornitai here, right? What if real Gornitai came and sat here with us? What would you all do? In 1 hour later, you would all be looking at your watches and, okay, Prabhuji, give us prasadam and I go home. Would you? No. So in Vaikuntha, real Gornitai would be sitting there with you. So why would you be looking at your watch? Because there is no watch over there. Watch is not needed. Because the time is always standing still. Nevertheless, what we want to understand is that जो knowledge हमें चाहिए वो एक knowledge चाहिए संबंध ज्ञान. What is my relation with Krishna? Why did I come here? How? And I should go back to Krishna. That is one kind of knowledge. Okay. The second kind of jnana is prayojan. Okay, I am not this body. I am spirit soul. I am residing in this body temporarily. Krishna is my real father and I want to go to my father's home. So where do I go? Where is that place? That is prayojan. Prayojan is this. Every picture that we have in the Bhagavad Gita, Bhagavatam, they all show more or less our prayojan. Where do you want to go? Where do I want to be? So that is prayojan jnana. Remember, we were discussing the picture and we were discussing that the pictures not only help us concentrate on Krishna, but at the time we were chanting, they also show us our prayojan. Where is my destination? Where am I going to go? कहाँ जाना है? कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है? ये संबंध ज्ञान है. प्रयोजन ये के जाने वाला स्थान ये, यहाँ मुझे जाना है. और अब हमें ए समझ में आ गया. Point A, संबंध ज्ञान. Point B, where do I want to go? Now, how do I go from A to B? That is the third kind of ज्ञान. भक्तों को ये तीसरे प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है. उस ज्ञान को क्या कहते हैं? अभिधेय ज्ञान. अभिधेय ज्ञान. अभिधेय ज्ञान का अर्थ है कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे जाऊं. कहाँ से तू आया, कहाँ आ गया और कहाँ तुझे जाना है. तो यहां से यहां कैसे जाऊंगा? साधना भक्ति से. साधन भक्ति, साधना भक्ति, भक्ति, डिवोशनल सर्विस, कृष्ण सेवा, ये सब आता है अभिधेय ज्ञान. दैट इज अभिधेय ज्ञान. Chanting the holy name, anarth nivriti, so many kinds of devotional service, ये सब अभिधेय ज्ञान इसको कहते हैं, जो हमें ए से बी तक ले जाने के लिए काम आएगा. इसलिए हम उस ज्ञान को जानना चाहते हैं.
अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि मैं ए से बी कैसे जाऊंगा। अगर मुझे ए से बी नहीं पता, या मुझे ये नहीं पता कि बी है कहाँ, वेयर इज बी, वेयर इज माई डेस्टिनेशन, देन हाउ एम आई गोइंग टू रीच? Can any of you reach somewhere not knowing where you're going? God knows where we reach if we don't know where you're going. So, devotees must know where I want to go, where is my destination, where do I desire to go. Must know that. And so you don't forget, we put the pictures up everywhere. Every temple, every center, every book, everything related to us is gone. You would always flip the page and the destination will be right in front of you. Somehow or the other, we pack it so nicely within your life, so we make sure, we try to make sure that you never forget Prayojan. If you forget Prayojan, then there is no hope. Is there any hope for those who don't know Prayojan? So you must know Prayojan. You must know Avideya, how to get to Prayojan. And first of all, you must know Sambandh Gyan, what is my relationship with Krishna. जो लोग अभी भी या जब तक बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में पड़े रहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरे पिताजी, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, वो कभी भी जो लोग इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे, वो कभी भी भक्ति में नहीं जा पाएंगे। भक्ति में जाने के लिए ये बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से हमें ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो हम चर्चा कर रहे थे three kind of chanting. So the first kind of chanting is chanting in the head. It is also known as the initial stage. किसी ने आपको बता दिया कि ये माला है और ये इसमें 108 मन के हैं और आपको इसमें से एक को पकड़ लेना है और उसी के ऊपर पूरे 16 शब्दों का महामंत्र बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप कर रहे हो, माइंड सब जगह जा रहा है, मॉल में, काम पे, जहाँ कहीं भी, सब जगह जा रहा है, सब कुछ हो रहा है और आप साथ में जप भी कर रहे हो। मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा कि it's wrong. I am just saying that is the initial stage, chanting with the hand, by the hand. So that is known chanting by the hand. And then one day, trying and praying to Krishna, we will start chanting in the head. That is the second age. We graduate one day from chanting in the hand to chanting in the head. So the Hare Krishna Mahamantra, I will not just be speaking and hearing the mantra, it will be automatically going in my head also. That is second stage of chanting by head. And that is not the real destination, it is midway. What we want to get to is chanting in the heart. Chanting in the heart. Chanting in the heart is very important. It is at the same time very simple and at the same time very, very difficult. How many of you have chanted 64 rounds in one day?
ever. 64 rounds in one day. Nobody else? Just one Prabhuji? Okay, maybe we should try that one day. To have the experience. Because it is an experience, isn't it? Is it an experience you want to live again? It'll be 6 hours. It'll take 6 Honest. hours. But you endeavor 6 hours? 8 hours, Mataji. 8 hours, 1.5 hours for 16. Like 2 hours. 2 for hours. 16. Okay. Yeah. 1.5 hour for 16 is too fast. Too fast? Yeah. 6 2 hours is minutes it takes me 6 minutes. So what happens? The thing is, what happens? After you chant 64 rounds, what happens? You sleep. Huh? Sleep. No. You won't. No. And even if you slept, you will still be chanting. Yes. That chanting will not stop. You will not be able to stop yourself from chanting. It will just keep going on. Satatam kirtayanto. It will just keep going on and on and on. Somebody came to Krishna consciousness and complained that, no, Krishna consciousness is not for me. I'm leaving. So what? Why? So right from the childhood, I have been told to count these numbers. You are in grade 1, 2, 3, 4. And now I've finished my education and I thought I am done with the numbers. Now I came to Krishna consciousness, I'm back into the numbers again. So the numbers game. Now you have to chant the 16 rounds and there is a 16 syllable mantra on every bead, and that's going to add up to be like 25,000 names, and I just don't want to. So a devotee told him, look, you don't have to chant 16 rounds because Krishna is not asking for 16 rounds. He is asking for Satatam Kirtayanto Mam. He said, where is my beats? I'm okay with 16. Satatam Kirtayanto Mam. Better than that is my 16 rounds. I chant for 2 hours and I am done. And that will work because it is given by Srila Prabhupada. But Srila Prabhupada also gave not only 2 hour chanting, but also so much devotional service along with that. So all day, directly or indirectly, you are engaged in serving. Like in this, the process of bhakti is Sarvopadi vinurmuktam tatparatvena nirmalam rishikena rishikesha bhakti-yoga. So we have to always be thinking about Krishna and engage our senses. Rishikena stands for our senses and Rishikesha stands for Krishna. Where do these senses come from? They come from Krishna. They are happy to serve Krishna. But I am not happy to serve Krishna. So, slowly and gradually, by engaging in devotional service, by chanting, associating with the devotees, and in the meantime, just chanting by hand. Chanting by hand is not bad. I am not saying that. I have heard people say that. If you cannot chant in your head or you cannot chant in your heart, might as well give up chanting. I said, no. Keep chanting in your hand until then. If you cannot chant in your head, it's okay. If you cannot chant in your heart, it's okay. Don't give up the hand. Keep chanting in the hand because one day you are going to get there. We think that,
Prabhuji, I've been trying. 2 years I've been doing this. It hasn't worked. This one person, he's a sannyasi now, but he was a student when he came to Krishna consciousness. And somehow, after 2 years, he got a chance to go to Mayapur. And he went to Mayapur in the festival time. All kinds of big, very, very senior disciples, 50 years initiated in ISKCON and so on, were all sitting together. And at the end, because he didn't know so much what he was doing, according to him, I'm not making that judgment, I'm just quoting him himself, about himself. So he said, I didn't know what I was doing, and they asked, somebody gave a class and they asked to ask questions, and I raised my hand and I complained that for 2 years I've been trying your process and my chanting is not going in my head, it's not going in my heart, and it's still on my hand. So this person who was giving a class, he asked everybody, okay, who else is still chanting in the hand? And almost everyone. Then he was told that all of these people are very senior Prabhupada disciples. They've been chanting for 50 years. And look, they're still not accepting that every time they're chanting out of their heart or their head. But none of them have given up chanting yet, and none of them are planning. So keep going with the chanting. It doesn't matter where you chant. We're just giving you the process that from the hand, somehow it has to go to our head. Some people are fortunate from their prarabdha or whatever, or kripa or karuna, whatever. They are fortunate that they grasp very quickly. You know, there used to be a Mataji called Madhu Mataji. Usha Mataji, you remember Madhu Mataji? Huh? You remember? So anyway, this Mataji went to work, and like she was coming to our Bhakti Vriksha, and we were training everybody to try to preach as much as possible. So of course she's at home and she doesn't get anybody to preach to. How much are you going to preach to your children before they start talking back? So she went. She was a security guard at night at and at work. Huh? She worked at ICBC. So of course at night there is nobody there except her supervisor. So she tried to preach to her supervisor. But it's just so happened that her supervisor was also a preacher. A preacher of not Krishna consciousness, not bhakti. He was the preacher of Paramatmavad. So she would try to preach to him about bhakti path, and he would defeat her by giving her argument of Paramatmavad. So it went on. Every time she came back, we gave her more ammunition to, now what can we say? You know, we would not recommend this, that you go to work and try to preach to your supervisor, and especially if the supervisor is so knowledgeable. But now you are, it's like the war has already started. What do you do? So we gave her as much ammunition as we could every time, and he gave her a new argument every time and defeated her. So one time I said, okay, Madhu, the next program is at your place. Why don't you invite him to your home? And I will take him on over there. You can't take him on. But by the blessings of Srila Prabhupada and my Guru Maharaj, I'll try to take him on. Invite him. He's more likely to come
to your place, then those days what we did, we had the Bhakti workshop group, and then we rotated the program. That this month it's at your house, this month it's at your house, this month, like that we rotated. So her program was coming up and this time came and I said, okay, invite this person. So he came, he brought his wife, he sat right there on the sofa, just like that, Mataji, in the front, sitting. And I was trying to give all the understanding of why Bhakti is by Srila Prabhupada given to be a higher place than Paramatma. So every time I looked at him, his mind was not there. It was like he wasn't there. He wasn't listening to a word I was saying. Sometimes I can tell that this person is listening to me, like happens to be in the room, but it's not paying zero attention. Hearing, not listening. Not listening. And not even hearing properly. So in any case, I said, well, what can I do? If he will not listen, he will not hear, then I gave him a chance to ask questions and he just shut up. No questions. He didn't ask anything. She even looked at him, ke, acha, ab पूछ. पूछ. क्या पूछना है? प्रभु से पूछ. लेकिन वो कुछ नहीं बोला. लेकिन एक बात क्या हुई? अच्छा, फिर हमने सबको माला बांटी कि सब लोग एक एक माला का जप करें. सबने माला ले ली, उसने भी ले ली और माला को लेके ऐसे सोफे के साइड में स्लाइड कर दिया. मैंने देख लिया इसने माला को ले ली, ना नहीं किया. अब उसके साथ में उसकी पत्नी आई जो काम पे नहीं होती, प्रोग्राम में आई सत्संग. अब वो बेचारी सब लेडीज के बीच में बैठी हुई है. वो देख रही है अपने हस्बैंड को, लेकिन क्योंकि सब लेडीज के बीच में बैठी है, सब लेडीज उसको देख रही हैं, तो पीयर प्रेशर में वो अपनी माला को रख नहीं पा रही कि मैं अगर रख दूंगी तो सब लेडीज मुझे घूरेंगी. तो बेचारी दूसरे लेडीज के डर से उसने अपनी माला पकड़े रखी और जैसे जैसे दूसरी माताएं जप करती रही, वो भी करती रही. तो एक माला का जप करके ये लोग प्रसाद वगैरह पाके घर चले गए. लगता है nothing happened. Then why are you telling us this story, Prabhuji? I'm telling you this story about the next day. Next day, वो लेडी, उसके सुपरवाइजर की वाइफ, जो पहली बार हमारे प्रोग्राम में आई, पहली बार उसने एक माला का जप किया, वो अगले दिन सुबह को फोन करके मधु को पूछ रही है, क्या था तुम्हारे जप में? मेरे माइंड से बाहर ही नहीं जा रहा. मैं सारी रात जप करती रही, मेरा जप ही नहीं रुक रहा, सुबह भी मैं कर ही नहीं. अगर कहीं मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो मेरी शादी तो गई. अब तू मुझे कुछ ऐसा बता कि जिससे ये मंत्र मेरे मन से निकल जाए, मैं क्लेंस हो जाऊं. कुछ मुझे ऐसा तरीका बता. मधु भी बहुत स्मार्ट थी, और जप कर. उसी से निकलेगा. तो यू सी, आप में से कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? एक्चुअली स्टार्टिंग जब स्टार्ट करना शुरू किया था तब आपको नहीं होता. अब हम ग्रेजुएट हो गए. It should increase. ब्लैंक हो गया. It should go higher, but we are going in that sense not so much higher. Nevertheless, that is the process, and we should, whatever we started, जहाँ कहीं भी हमने शुरू में स्टार्ट किया, हर समय हमें उससे आगे बढ़ने का की तरफ
फोकस करना चाहिए कि अगर हम अभी भी हैंड में जप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हैंड में जप गिव अप नहीं करना, लेकिन उसको किसी तरह से हैंड में ले जाना। बहुत सारे तरीके हैं, मे बी किसी और क्लास में वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक दिन maybe we should try to do this, get together and chant 64 rounds, because after chanting 64 rounds जो उसको हुआ एक ही राउंड में, वो आप सबको 64 राउंड के बाद तो पक्का होगा। She was very fortunate, उसको एक राउंड में हो गया। ऐसा नहीं होता, एक ही राउंड में उसको हो गया, भगवान ने उसको, बिकॉज हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको हम क्या कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं कर सकते। आपको भगवान के साथ में सामने लाके खड़ा कर सकते हैं बस। उसके बाद अब भगवान के हाथ में, आपके हाथ में। तो अगर जो किसी को दबोच लिया भगवान ने, तो फिर भगवान का दबोचा तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन भगवान भी हमेशा के लिए नहीं दबोचते, दबोच के फिर उसको रिबिल देते, क्योंकि जबरदस्ती तो लव नहीं होता। जो जबरदस्ती किया गया वो तो लव नहीं है। कुछ भी हो सकता है जबरदस्ती, लेकिन लव नहीं हो सकता। लव तो आप तभी कह सकते हो, भक्ति इज लव। लव तो आप तभी कह सकते हो जब वो जबरदस्ती से नहीं है, स्वेच्छा से है। बाय योर ओन स्वीट विल, योर डिजायर, यू डिजायर टू लव कृष्ण एंड नथिंग एल्स, दैट इज भक्ति, दैट इज लव। And if that's not there, then it is force. Force may be a harsh word, maybe you can look for a softer word, but in any case, it is not love. For it to be love, it has to be coming out of my heart desire. Krishna, I want you and I want nothing else. मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। हम कहते हैं गिरधर गोपाल आप भी मेरे, लक्ष्मी भी मेरी, सरस्वती भी मुझे चाहिए, ये भी वो भी, मेरे पास पूरी शॉपिंग लिस्ट है, उसमें कहीं नीचे कृष्ण का नाम भी लिखा है, तो आई लव यू। लेकिन लव इज मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। अब हम ये नहीं कह रहे अपने पत्नी को छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दो, और वो पॉइंट नहीं है। ये जो कुछ भी हमारा रिलेशनशिप है, ये तो फिजिकल, बॉडीली, बेस्ड ऑन द बॉडी है, ये बेस्ड ऑन द सोल नहीं है। बेस्ड ऑन सोल तो एक ही रिलेशनशिप है, उसको हम किसी तरह से जप करके उसको हम और ज्यादा पक्का करने की हमेशा कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं यहाँ कोई लेक्चर देने नहीं आया था, आप लोगों की सेवा के लिए मुझे बुलाया था उषा माता जी ने, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा चैंटिंग के बारे में आपसे शेयर किया। लेक्चर के लिए नहीं आया था तो इससे मतलब है मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं आज यहाँ ये बात करने वाला हूँ। I wasn't planning to talk about any of these things that I talked about, but anything you want to know more, anything you have a doubt, anything you have a question about, anything you would like to hear about, please come forward.
I want to talk to you, I want to hear you. मासी, अरे वो yes, वैसे प्रभु, yes. तो बंधो का मतलब क्या है? बंधो भगवान का नाम, थैंक यू फॉर आस्किंग, भगवान का नाम दीन बंधु ही है। बंधु ही है ना, बंधु। हाँ, लेकिन मंत्र बंधु नहीं है। जब हम बंधु, किसी का नाम दीन बंधु है, उसको बुला रहे तो बंधो कहते हैं। किसी का नाम, जैसे गांव में कहते हैं, किसी का नाम हरि है तो उसको हरि हरि नहीं बुलाते, हरिया, समथिंग लाइक दैट। तो इन संस्कृत ऑल्सो व्हेन यू कॉल somebody, no, don't ask me too technically, because it is not me who wrote that mantra. I am repeating like a parrot and I am asking you to do the same. Trying to invent something new. आप अपनी भगवत गीता घर में जाके खोल के देख लेना। उषा माता जी की भगवत गीता में तो कंफर्म हो गया, शायद आपकी में भी कंफर्म हो जाए, लिखा वही है। तो नाम तो भगवान का दीन बंधु है, लेकिन जब हम दीन बंधु को पुकार रहे हैं तो बंधो पुकार रहे हैं। जगत पति को पुकार, उनका नाम तो जगत पति है, लेकिन उनको पुकारते जगत पते कहते हैं। दीन बंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, या करुणा सिंधु है नाम उनका, लेकिन मंत्र करुणा सिंधु है, क्योंकि करुणा सिंधु को हम पुकार रहे हैं तो हम कृष्ण करुणा सिंधु कहते हैं, लाइक दैट। ओके, क्लियर? और एक और क्वेश्चन है इनको। यस, हरे कृष्ण मदर अल्पना। हाँ जी, हरे कृष्ण महामंत्र में द मंत्र इज हरे कृष्ण, not Hare Krishna. What is right in between that? Like everybody chant Hare Krishna, but Krishna का नाम है Hare Krishna, right? तो which one is correct? सब करेक्ट है, लेकिन लिखने में, बोलने में कृष्ण ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा। कृष्णा से भी कुछ रॉन्ग नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम हृदय से तो कृष्ण को ही पुकारते। कृष्णा कृष्ण का नाम नहीं है, किसी और का नाम कृष्णा है, लेकिन और भी कई लोगों के नाम कृष्णा है, द्रौपदी का भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर मन से कृष्ण कह रहे हैं, तो अगर हम कितना भी कहते हैं तो भी वो कृष्ण को ही रेफर करता है, भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपकी बात राइट है कि भगवान का नाम कृष्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दैट इज बेटर। कुछ लोग कहते हैं प्रभु कि हम माला क्यों करें, हम तो माला इज बाउंडिंग अस लाइक 16 खाली रहे। ये गद्दी आपके पैरों के नीचे रखवा दें। I don't know why. So हम सारा दिन नाम ले रहे हैं, तो माला जरूरी है, क्यों करें? उसके लिए आप एलैबोरेट करेंगे? तो सॉरी, आस्क मी वन मोर टाइम, क्यों 16 राउंड्स ही क्यों करें, उससे ज्यादा क्यों नहीं कर लें? She is asking like why we have to do it on the bag. Why we can just like माला do it on the hand. मुंह से कर रहे हैं ना, माला क्यों पकड़ के करें? ओके, 16 क्यों, सारा दिन कर सकते हैं बाय माउथ? यस, आचार्यों का दिया हुआ सिस्टम है, वो स्वयं भी ऐसा ही करते हैं। हमारे गुरु जो कोई भी है, अगर हम श्रील प्रभुपाद के ग्रैंड डिसाइपल हैं, तो वो भी अपनी माला पे काउंट करके करते थे। श्रील प्रभुपाद भी अपनी माला पे काउंट करके करते थे। उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी वही हमें सिखाया गया है। तो जो हमने श्लोक आपको सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम बताया, उससे पहला श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अध्ययनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति के लिए हमें अनुशीलन करना चाहिए। अनुशीलन मतलब जो हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने किया है, वो प्रोसेस को हम रिपीट करें। हम आपको कोई नई चीज नहीं सिखा रहे। आपकी दादी आई एम श्योर जब करती होगी माला पे, नहीं तो आपकी दादी की माँ करती होगी या इस बारे में जानती होगी।
आपको ये आसमान से नहीं टपके, आप किसी परिवार में जन्म लिए हो और आपके सबके यही परिवारों में बता रहा है। तो इट इज नॉट एनीथिंग न्यू, इट इज वैदिक, it is shastric, it is authorized, it is the system. Now, it is not that, okay, why should I blindly follow the system? तो blindly नहीं follow करने के लिए हमने आपको अभी इसी टॉक में बताया कि जब हम माला पे जप करते हैं तो हमारी पांचों इंद्रियां जप में लग जाती है। अगर जो पांचों इंद्रियां, वो भी अनफ नहीं होता, अगर मेरी पांचों इंद्रियां लग भी गई तो भी लगाना तो मन को था। तो इसलिए पांचों इंद्रियां, और अगर जो हमने कहीं किसी स्थान पे पांचों इंद्रियां लगा दी तो मन वहां पे जाना एक आसान चीज हो जाती है। इट इज नॉट that difficult to bring the mind to where your senses are. If your senses are there, then it becomes a little bit easier for the mind to go there. In the Bhagavad Gita, not in this one, you have another Bhagavad Gita? Yes, Prabhu, अंदर है। अच्छा, कोई बात। आप सब ने देखा होगा कि हर भगवद गीता में, आप सबकी भगवद गीता में एक जो पिक्चर है, उसमें से एक पिक्चर है जिसपे 5 रथ, 5 घोड़े लगे हुए रथ है। वो घोड़ों के आगे, किसी के आगे नाक लगी है, किसी के आगे मुंह लगा है, किसी के आगे कुछ लगा है। तो वो पिक्चर जो है वो हमारे एग्जिस्टेंस को पोर्ट्रे करती है। तो जो घोड़े हैं उस पिक्चर में, वो हमारी 5 सेंसेस है। और फिर उन घोड़ों के पीछे रस्सी है, लगाम, और फिर उसको लगाम को पकड़ने वाला, संभालने वाला है एक व्यक्ति। तो वो घोड़े और लगाम और ये व्यक्ति, सारथी, ये हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है। और उसके पीछे, आप अपने घर में जाके देखना, अपने भगवद गीता खोल के, उसके पीछे, सारथी के पीछे एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। दैट इज योर आत्मा। तो अगर जो हम सेंसेस के घोड़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट इजियर फॉर द मन टू, कोई गारंटी नहीं है फिर भी। मन तो क्या है, जैसे दिल तो पागल है, ऐसे ही दिल दीवाना है, ऐसे ही वो दिल नहीं है, किसी का दिल पागल या दीवाना नहीं हो रहा, मन के लिए ही कहा जा रहा है। दैट इज मन ओनली, इज नॉट दिल। दिल का काम तो केवल धड़कना और कुछ नहीं करता, वो करता तो सब कुछ मन है। अगर किसी ने लगाना है तो मन लगाना है। वो कहते हैं कि भगवान में मन लगाओ। और अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है, नई नई शादी हुई है, तो कहते हैं एक दूसरे में मन लगाओ। राइट? किस किस की अरेंज मैरिज हुई है यहाँ? सब, बाकी सब लव मैरिज वाले बैठे हैं। तो अरेंज मैरिज, व्हाट डज अरेंज मैरिज मीन? अरेंज मैरिज means love after marriage, and love marriage means love before marriage, right? That is the only difference. So it is love before marriage or love after marriage. That's the only difference. So why does that love happen? Because एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, एक दूसरे में मन लगाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे you fall in love. तो उसी तरह से we are also on a spiritual level, on a transcendental level, we're trying to fall in love with Krishna. तो ये जो चैंटिंग है, अगर जो हम ये चैंटिंग को माला पे करते हैं तो वो इंद्रियां हमारी अब
सब उसी में लग गई जो हम चाहे हैंड में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी इंद्रियां अब उसमें लग गई। तो इट हेल्प्स ऑल्सो। ये जो ये मुद्रा है, आप सब लोग मुद्रा समझते होंगे, ये मुद्रा है। दिस मुद्रा हेल्प्स कंट्रोल योर मन। अगर जो आप ऐसे भी जब करे भी ना भी, कब मुझे अपने मन को कंट्रोल करना है, कंसंट्रेट करना है, मुझे किस चीज़ पे ध्यान लगाना है, तो वो आपको ऐसे करने के लिए कहेंगे। तो द चैंटिंग ऑन द बीट्स also helps in that way. And the biggest thing is following the acharyas. Even the 6 Goswamis, Sankhya Purvak Naam Jap Kariye, even they chanted and counted. Even Chaitanya Mahaprabhu himself counted his chanting. If I think I am more advanced than Chaitanya Mahaprabhu, then I don't have to keep track of my chanting. I can just chant without counting. So, it is a good idea in that sense, and it is nothing new. It is as original as time. जब कुछ भी नहीं होता था, लोगों के अनुसार we were cavemen, we still had beads. There never was a time when there was no beads. In Russia, because devotees' beads were taken away, they made their beads. रशिया में लोग भक्तों को हमारे जेल हो गई, उनको उनसे बीड्स छीन लिए गए कि नहीं, आपको जब करना नहीं अलाउड है। नो बीड्स, नो बीड बैग्स इन द प्रेजेंट। लिमिटेड फूड मिलता है। तो हमारे भक्तों ने जो ब्रेड आई उनके खाने के लिए, उसको पीसेस करके छोटे छोटे ब्रेड के बीड्स बना के रख लिए, और जब वो सूख गए उनको माला में पिरो लिया। 108 ब्रेड के छोटे छोटे सूखे हुए टुकड़ों से अपनी माला बना ली, लेकिन जप नहीं छोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और दूसरी तरफ हमें, जिनके एंसेस्टर्स हमेशा से ये माला पे जप करने की महिमा को जानते समझते रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि क्या माला जरूरी है। Next. Any other question? Do you want to take that question you sent me? Oh, you want me to send you again? No, do you want me to discuss that? Definitely. Huh? Yes. So Mataji sent me a recording of somebody who was comparing, किस चीज को ना कर रहे थे वो, कि ये नहीं है लेकिन ये है। मतलब जैसे कि किसी भी चीज का रियलिटी भी है और उसका परसेप्शन भी है, राइट? तो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में उसकी रियलिटी की भी बात की जाती है और उसके परसेप्शन की भी बात की जाती है। कहीं रियलिटी कहीं परसेप्शन, कहीं रियलिटी कहीं परसेप्शन। तो जो रियलिटी है दैट इज मोर क्लोजर टू साकार दर्शन। कृष्णा हैज अ फॉर्म दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा हैविंग अ फॉर्म। देयर इज गॉड and that God has a form. Then there is another darshan, that there is God, but the God has no form, because a form is limited to what a form can do. So because he is unlimited, he's got no form. तो दोनों हम लोग जो है ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय, हम दोनों को मानते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम निराकार को नहीं मानते. We do not reject Nirakar because Nirakar is also perception of God. In Bhagavad Gita, Krishna says, I am the Brahma Jyoti. The Brahma Jyoti comes from me. So the Brahma Jyoti is bona fide. It's coming from Krishna. Krishna is accepting in Bhagavad Gita that the Brahma Jyoti comes from me. Then how can I say Brahma Jyoti is bogus? It cannot be bogus. It comes from Krishna. So, the other thing is Paramatma. Paramatma, Krishna says, is also me. And, of course, me is me. I am the Supreme Personality of Godhead. तो हम लोग तीनों को मानते हैं, लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉर्मलेस रियलाइजेशन को मानते हैं, फॉर्म को नहीं मानते. वो उसी ग्रंथ में से सारे वो एग्जाम्पल उठा लेते हैं जहां पे रियल चीजों को परसेप्शन से कंपेयर किया गया. तो वो उसी शास्त्र के ऊपर भगवान को निराकार प्रूव कर देते हैं. और भगवान ने ये शास्त्रों की इस तरीके से रचना की है कि जिसको चाहिए साकार वो साकार को मान लो, और जिसको चाहिए निराकार वो उसको मान लो, जिसको चाहिए ब्रह्म ज्योति वो उसको मान लो. तीनों तो मैं ही हूं, तीनों तो मैं ही हूं. लेकिन हम लोगों को एक रास्ता पकड़ लेना अच्छा है. जैसे कि जब हमारे बच्चे छोटे स्कूल में जाते हैं तो दे टेक ऑल सब्जेक्ट्स, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में ऑल सब्जेक्ट्स. साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, सोशल स्टडीज भी है, सब कुछ है. लेकिन जैसे हायर ग्रेड्स में जाना शुरू करते हैं तो देन दे स्टार्ट टू ड्रॉप सब्जेक्ट्स. दे डू नॉट टेक ऑल द सब्जेक्ट्स. मुझे पता नहीं अब क्या होता है, लेकिन 11वीं में आने पे आपको चूज करना पड़ता था कि नाउ यू वांट टू गो टू साइंसेस, यू वांट टू गो टू कॉमर्स, यू वांट टू गो टू आर्ट्स, व्हाट यू वांट टू डू. तो व्हाट जस्ट हैपेंड, यू ड्रॉप सम सब्जेक्ट्स. अगर जो आपने साइंस नहीं ली, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी गई, क्या आपको आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी? हो सकता है लाइफ में पढ़े, लेकिन फिर भी अब आपको वो पढ़ाई नहीं जाएगी बिकॉज आपने साइंस ली नहीं. और फिर बीएससी कर ली तो उसके बाद कोई भी मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में नहीं कर सकता. उसको 3 करनी पड़ेगी. उसमें से भी अब एक को चूज करना पड़ेगा. यू कैन डू एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. So as you are going up higher in the understanding, you are being left with smaller and smaller curriculum, smaller expertise. Now you want to do a PhD. Let's say you are from chemistry and you want to do PhD. You cannot do PhD in chemistry. You have to pick up one aspect of chemistry, one small little aspect of chemistry to do PhD on. You cannot say, I am a PhD of chemistry. Can you? Nobody can say that. You cannot do PhD on chemistry. You have to do a PhD on one little aspect of PhD. So, as your studies keep going higher, your subject matter has to keep narrowing down. So that's why now if we want to go further, we have to stick with one. Do I want to concentrate on the Brahma Jyoti? Do I want to worship Krishna as the Paramatma in everybody's heart? Or do I want to worship Krishna as he is in his full form? Okay. तो हमारे आचार्यों ने ये चूज किया है कि हम भगवान को
श्री भगवान उवाच, भगवद गीता में जो लिखा है, श्री भगवान उवाच, जैसे भगवान वहां खड़े हैं युद्ध भूमि में, वैसे हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो बाकी के परसेप्शन से उनको उठा के एक तरफ रख देते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्य लोग कभी भी उस एक्सप्लेनेशन, ऑल्दो इट कम्स फ्रॉम द शास्त्र, वी नेवर कंसंट्रेट ऑन दैट, वी कंसंट्रेट ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ द शास्त्र जो भगवान के साकार रूप को की बात कर रहा है। अब मैंने कहा माता जी से कि ये प्रभु जी जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये इम्पर्सनलिस्ट बात कर, तो माता जी का एकदम से कटाक्ष आया, क्या ये इम्पर्सनलिस्ट है? आई डोंट थिंक ही इज इम्पर्सनलिस्ट। उसे खुद नहीं पता वो क्या है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या है। लेकिन वो कृष्ण भक्त ही है। फिर आप वही कह रहे, भक्त तो हैं, मैं नहीं कह रहा वो भक्त नहीं है, लेकिन उनको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। कौन उनके गुरु हैं, क्या उन्होंने उनको सिखाया, राइट? वो जो कुछ भी कहते हैं भगवान के कृष्ण लीला के बारे में, वी एंजॉय इट, लेकिन जो लोग प्रॉपरली अपने गुरु के उसमें करिकुलम में नहीं चल रहे, वो कभी यहां से उठा लेंगे, कभी यहां से उठा लेंगे, कभी यहां से उठा लेंगे। तो इसलिए वो कुछ भी नहीं है, ना वो सही तरह से इम्पर्सनलिस्ट हैं, ना वो सही तरह से पर्सनलिस्ट हैं। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं उनके, हालांकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं उनके ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करना चाह रहा। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं। ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथाकारों का एक ही पर्पस होता है, लोगों का ध्यान लगा के रखो, रोज नई नई बात बताओ, क्योंकि फिर आप सेम कथा जाके सब जगह करोगे तो कौन आपको नेक्स्ट टाइम बुलाएगा, हम आपको डीवीडी लगा लेते हैं जी। तो नई नई चीजें सारे दुनिया में से वो खोज खोज के लाते हैं, चाहे वो शास्त्र में से भी आ रही है, लेकिन हमारे लिए वो बोनाफाइड नहीं है, क्योंकि वो भगवान के निराकार पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, साकार पे नहीं कर रही। हम श्रील प्रभुपाद के दिए हुए साकार एक्सप्लेनेशन पे ही कंसंट्रेट करें। उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ निराकार को रिजेक्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट रिजेक्टिंग निराकार, बिकॉज निराकार ऑल्सो कम्स फ्रॉम कृष्ण। हाउ कैन वी रिजेक्ट? We are not rejecting the Brahma Jyoti, because Brahma Jyoti also comes from Krishna. How can we reject that? But our explanations, Srila Prabhupada's explanations, always concentrate on the form, personal form of Krishna, rather than impersonal form of Krishna. Or Krishna or anything. Anything can be impersonal, anything can be personal. This TV is a TV. It's right there in person. But somebody can make this TV conceptual. That TV is this concept. Okay, fine. But here is the TV and here is the concept. Now, which one do you want? If you are in Sakar, you concentrate on TV. If you are in Nirakar, you concentrate on the concept of the TV. I don't want the concept of the TV. I want the TV. The concept is not wrong. What is wrong with the concept? Concept से तो टीवी आया। किसी टीवी बनाने वाले ने बिना कॉन्सेप्ट के टीवी बना दिया? पहले तो कॉन्सेप्ट बनाया, उससे टीवी बनाया। तो किसी को भी रिजेक्ट करना राइट नहीं। We accept both. And being followers of Srila Prabhupada, we concentrate on the form, on the sakar, personal form explanation of Krishna and everything to do with Krishna. Let's say this picture here. There is a chariot, and on top of the chariot there is something.